sage who reimagined Hinduism. It's a book about Sri Narayana Guru, who is extremely well known in Kerala but not very well known in the north. And I wanted people who are not from Kerala to understand about the life, the lessons and the legacy of this great sage. He came into a Hinduism which was practicing a lot of discrimination, casteism and untouchability and other kinds of obnoxious practices. And he completely overturned that through his own courage. But he did so within the faith. That is, that he himself, though he was from a community that is today considered OBC, in those days he was treated as untouchable, he nonetheless consecrated a Shiva Lingam himself in a temple. And when the Brahmins objected, he said, think of it as our Shiva, making the point that how can you take Shiva and divide him between Brahmins and us? Shiva belongs to everyone. He established temples open to all. He encouraged the so-called lower castes to study in schools, establish schools that were open to them. He encouraged enterprise, hard work, handicrafts, trade. He was somebody who wanted people to rise above the limitations that have been imposed on them by the shackles of society. So he was a great voice for social freedom. He was also a very important spiritual philosopher in the Advaita tradition. And at the same time, he believed in the unity of all religions. He held India's first all religions conference in 1924. He wanted to get the common elements of all religions to be respected. So it was very much a message of compassion, of unity, one that is still relevant to all of us in India and in the world today. सर AI समिट दिल्ली में चल रहा है. फ्रेंच प्रेसिडेंट भी उन्होंने भी UPI सिस्टम के भारत की काफी तारीफ की है और साथ साथ जो राफेल डील है उसको लेकर भी कहा है कि ये मेक इन इंडिया का एक पार्ट है और भारत इससे और सशक्त बनेगा. इसकी कोई क्रिटिसाइज इसको कैसे कर सकता है? तो No, I think though I've not had the chance to go to the summit today, I'm speaking there tomorrow. From what I understand is that these first couple of days have gone extremely well. There have been some glitches, some organizational things. These things happen in a large event. But by and large, what has been impressive is, first of all, the attendance. As you said, a number of presidents, prime ministers and world leaders are here. And they've come with a strong message of wanting to see a newly integrated world in AI development where the impact upon society will be the principal preoccupation, and India has clearly led the drive in this area. As far as the French Rafale is concerned, parts of it are being manufactured in India, and that is a very important aspect of the deal because it is part of strengthening our defense, but also increasing our self-reliance in the defense sector. So all of these are very important developments. I believe that defense is important for India, not because we want to go to war, but because we don't want others to think that we are so weak that they can be tempted to go to war. It is a defensive defense, literally, and that's what we are working for. I support the government on that. केरला को लेकर भी है. पिनरई विजयन ने केरला स्टोरी 2 के लिए उसको क्रिटिसाइज किया है, नफरत फैलाने वाली बताया कि इसी वेणुगोपाल जो है उन्होंने कहा है कि झूठ फैलाती है ये फिल्म आपकी. देखिए, जो पहला फिल्म जो था केरला स्टोरी, वो तो नफरत फैलाने वाला फिल्म ही है और उसमें कोई बुनियाद नहीं थे. कह रहे थे कि हजारों लोग कन्वर्ट हो गया, ये सही नहीं है. मेरे ख्याल में कुल मिला के कुछ सालों में करीब 30 केस ऐसे कुछ थे और जो कहानी वो बता रहा था वो सिर्फ कुछ लड़कियों के हुए थे. देखिए, हमारे देश तो बड़े देश हैं. अगर इधर उधर कुछ होते हैं उसका मतलब नहीं कि आप उसको बना के बहुत बड़ा कहानी बना के प्रोपेगेंडा कर दे. ये नफरत फैलानी बात कम छोड़ के श्री नारायण गुरु की किताब जो मैंने आज प्रकाशित किया, उपराष्ट्रपति आके ने कहा क्या कहा कि आप सब लोग सब साथ एक साथ जीना चाहिए. और एक साथ जीना का मतलब है कि आप क्यों, जब ये जरूरी नहीं है इस किस्म की चीज बताने के लिए जो सही भी नहीं है और जो लोगों को सिर्फ उनके मन में नफरत पैदा करता है, ये क्यों करें? मेरे ख्याल में इस किस्म की चीजें नहीं होना चाहिए. सब लोग को एक साथ ले आने वाले. हमारे बचपन में क्या हम एंटरटेनमेंट टैक्स को क्या देते थे? एंटरटेनमेंट टैक्स वेवर अमर अकबर एंटनी. 3 बच्चे एक परिवार से जो 3 अलग अलग धर्म में उसको पालते हैं और अंत में एक साथ करके वो विलन को हराते हैं. इस किस्म की चीज जो हिंदू मुसलमान ईसाई सब एक साथ रहें, यही भारत की उद्देश्य होना चाहिए. मेरे ख्याल में इस किस्म के फिल्म को हम तारीफ देने के बावजूद हम ये के अलावा हम ये कर रहे हैं. इस किस्म के नफरत फैलाने वाले किसका गुण है इसमें? मुझे अच्छा लगता है. वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम.